ईरान और इजराइल के बीच जंग का आप ये समझ लीजिए आगाज हो चुका है और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। मिडिल ईस्ट के दो तगड़े देश, मतलब आप ये कह सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो वॉर हो रहा है ना दोनों देशों के बीच, ये मदर ऑफ ऑल वॉर है। यानी अगर अब तक आपको लगता था कि इजराइल हमास के बीच हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल मजबूत है, रशिया यूक्रेन के बीच वॉर हुआ तो भले ही यूक्रेन सरवाइव कर गया और अब हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन की तरफ से सोचिए रशिया पर ड्रोन अटैक कर दिए गए। लेकिन जब शुरुआती दौर में यह अटैक हुआ था तो सबको पता था कि जो रशिया है वो मजबूत है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने तो भी सबको पता था कि भारत मजबूत है। लेकिन इन दो देशों में जब वॉर की स्थिति बनी है ना तो ये मानकर चलिए कि दोनों देश मजबूत हैं और सिर्फ ये मान लेना कि इजराइल एक तरफा कार्रवाई करेगा पूरी तरीके से गलत होगा। हालांकि इजराइल ने अब इस युद्ध को छेड़ तो दिया है, ईरान के एयरबेस पर हमला करने की जानकारी भी दी है, दावा भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी बैकफायर किया गया है। खबर यह मिल रही है कि ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल को भी बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक हुआ इसमें ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए, बड़े बड़े लोग मारे गए और खबर तो यह भी मिल रही है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बम पर काम कर रहे थे उनको उनके परिवार के समेत खत्म कर दिया गया इस अटैक में। अच्छा, इसके अलावा कई आम लोगों की भी मौत की खबर सामने आ रही है, हालांकि इसकी ऑफिशियल अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से तेहरान में अटैक किया गया, तबाही मचाई गई, तो ईरान चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। और हुआ भी यही, जिस सुबह इजराइल की तरफ से हमला हुआ उसी रात को यानी बीती रात ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तेल अवीव के पास के इलाकों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। इजरायली मीडिया इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, इजरायली पुलिस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि एक इजरायली महिला की मौत इसमें हुई है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि दोनों देशों में प्रॉपरली जब जंग होगी, जब दोनों तरफ से बैक टू बैक मिसाइलें दागी जाएंगी तो कौन किस पर हावी होगा, कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा। आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यही समझाने की कोशिश करेंगे कि चाहे जमीन के लिहाज से हो, चाहे हवा के लिहाज से हो, चाहे समुद्र के लिहाज से हो, कौन कितना भारी है, कौन किस पर ताकतवर पड़ने वाला है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल वॉर कहा जा रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान को भी कोई छोटा मोटा देश समझने की कोशिश ना करे। ईरान मजबूत है, दोनों ही मिडिल ईस्ट के बहुत मजबूत देश हैं और इनके पीछे अपने अपने सहयोगियों का सपोर्ट भी है। अब कौन ताकतवर है ज्यादा, आइए ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर जमीन पर लड़ाई होती है तो कौन आगे होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूं। जमीन पर हुई लड़ाई तो कौन आगे रहेगा। इजराइल के पास कुल 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 4,65,000 रिजर्व सैनिक और 35,000 अर्धसैनिक बल हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरान की सेना में 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि लगभग 3.5 लाख रिजर्व सैनिक और 2,20,000 अर्धसैनिक बल हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक, 43,407 बख्तरबंद वाहन, 650 ऑटोमेटिक तोपखाने यूनिट्स, 150 रॉकेट आर्टिलरी शामिल है। ईरान के पास 1996 टैंक और 65,000 बख्तरबंद वाहन हैं। यानी अगर आप बख्तरबंद वाहनों की बात करेंगे तो ईरान आगे है, अगर आप टैंक की बात करेंगे तो ईरान आगे है, अगर आप सक्रिय सैनिक की बात करेंगे तो ईरान में सक्रिय सैनिकों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे रिजर्व सैनिकों की तो उसमें ईरान थोड़ा सा पीछे है। अब बात करते हैं अगर हवाई हमला हुआ तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा। इजराइल के पास 612 विमान है, जिसमें 241 लड़ाकू जेट, 146 हेलीकॉप्टर व 48 हेलीकॉप्टर हैं जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 551 विमान है। अगली ग्राफिक प्लेट चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। ईरान के पास कुल 551 विमान है, जिसमें 186 लड़ाकू जेट हैं, 129 हेलीकॉप्टर हैं और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अभी इसी ग्राफिक प्लेट पर रहिएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल के पास विमानों की संख्या ज्यादा है, लड़ाकू जेट की संख्या ज्यादा है, हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है और अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या भी ज्यादा है बजाय ईरान के। यानी अगर हवाई हमला हुआ तो कहीं ना कहीं इजराइल ताकतवर नजर आता है। अब बात करते हैं, अगली ग्राफिक प्लेट लेकर आइए। अब बात करते हैं समुद्र में किसके पास ज्यादा ताकत है। तो देखिए, नौसेना की बात करें तो इजराइल के पास 5 सबमरीन है,
7 कोरवेट हैं और 45 गश्ती जहाज हैं। ईरान के पास 7 फ्रगेट हैं, 3 सबमरीन हैं, 19 गश्ती जहाज हैं और एक माइन वॉरफेयर जहाज है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में दुनिया के 145 देशों में ईरान 16वें नंबर पर है, जबकि ईरान 15वें नंबर पर आता है। यानी एक ही नंबर का फासला है अगर आप ग्लोबल फायर इंडेक्स में देखते हैं दोनों देशों को। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आप लगातार समझ रही हैं कि आखिर हवाई हमले हुए, समुद्री हमले हुए या जमीन पर हमले हुए तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एडी चोटी का जोर है, यानी कि अगर दोनों देश आपस में लड़ते हैं, जो कि लड़ भी रही हैं, तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा और उन तस्वीरों को भी देखना होगा। फुल फ्रेम तस्वीरें लेकर आइए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान इजराइल में के बीच किस तरीके से जंग छिड़ी हुई है और ये कहां तक जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के पास है, तो ईरान के पास भी कई ऐसे देश हैं जो उसका सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी देखना होगा कि अमेरिका हमेशा से प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। अमेरिका फ्रंट फुट पर कभी नहीं खेलता है और अब जब बारी आई है इजराइल और ईरान के बीच जंग की, तो यहां भी अमेरिका तो बचता हुआ नजर आया, लेकिन वो तो जगजाहिर तब हुआ जब इजराइल की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कह दिया कि हम ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है आपको इस बयान को सुनना चाहिए। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए और फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बताइएगा आपके हिसाब से आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं। और ईरान और इजराइल की ताकत को आपने समझ लिया, अब आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage.
Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.